Okay. So master basically reconfigures clock mode on the fly. That is the important aspect, because on the runtime, master has to communicate with any of the available slave devices. So it must have this ability to reconfigure the clock mode on the fly, or when it is actually running the system. And there is the detail of the clock modes that we were referring to in the preceding slide. Now we really have to see what it means by the four clocking modes. So in this given diagram, we have these four at the top, these four clock signals, and the difference basically is because of the clocking mode selected. So that two important aspects that basically define the clocking mode is the clock polarity and the clock phase. So clock polarity and clock phase are the two important aspects that we need to consider, we need to understand before actually interpreting the clock signal. Otherwise, everything is the same. The important aspect lies basically in these two parameters of the clock. So what it means, we have to see it right now. First of all, what is the clock polarity? Clock polarity means what will be the idle state of the clock when there is nothing happening on the data bus. यानी कि जब data transfer नहीं हो रहा होता, जब कोई communication नहीं हो रही बस के ऊपर, तो in that case what will be the state of the clock signal? तो ये define करता है by polarity के what will be the state of the clock when there is nothing happening. तो अगर आपने clock polarity को zero set किया है, it means the clock will be in the low state when there is nothing happening. Similarly, if you look at this second diagram, clock signal, it's also at the low level, and polarity is zero. So polarity zero means the level when there is nothing happening, or in short, I can say the idle state of the clock. And when polarity is one in both these two cases, polarity one means the level of the signal will be high when there is nothing happening, because the actual data transferring starts with this shaded region, this kind of gray region. This is the active region of communication. So this starting from here. So we can divide this. If you look at the transfer cycle, we have number 1, 2, 3, 4. So the transfer cycle actually starts with this from here, from this point of time, and finishes at this point of time. So we have to see what actually happens in the transfer cycle. Otherwise, we can assume the idle state of the communication. So now we understand the impact of this polarity signal on the clock state when there is nothing happening, or the idle state. Zero means it will be in the zero level in the cases, and if polarity is one, it means the clock will be in the high level when there's nothing happening. Okay, now we have to see the phase. What is the impact of phase? So phase actually defines how uh, the clock will behave when the transfer cycle starts. So for example, let's take these two top clock signals as a case. So in both of these cases, we know the polarity zero means the idle state is zero. But what is the difference of this phase parameter? Here the phase is zero, and here the phase is one. We are already familiar that there is a clock period of every clock cycle, right? And that is how much time the clock signal takes to change its state, or to repeat itself. I mean, the pattern it makes, it repeats the same pattern over a period of time, and the time it takes to change that pattern is basically the time period. और इस केस में अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक, ये जो ग्रे शेडेड है 1 2, ये शेडेड है, that is basically representing the clock period. So this is the clock period of a single clock pulse. और इस पीरियड में और जनरली क्लॉक साइकिल की जो ड्यूटी साइकिल होती है वो 50% होती है, यानी उसका जो क्लॉक पीरियड होगा उसमें 50% के लिए वो उसका लो लेवल होगा, और 50% के में टाइम के उसका हाई लेवल होता है. ये 50% ड्यूटी साइकिल होती है. लेकिन अब बिहेवियर क्या होगा? अब if we consider the behavior of these two the clock signals which are actually the same, but difference ये है कि in this case in the top diagram we see the clock basically retains its idle state for the initial 50% of the time and then changes its state to the other level. जबकि इस केस में it immediately changes its state in the initial 50% of the clock time and then returns back to the initial state. तो फर्क जो है, ये जो फर्क है कि initially it retaining the same idle state or basically changing it, it depends upon the phase. So phase basically it decides if it will continue with its idle state in the beginning, ठीक है, या वो उसके अपने retain रखेगा in the initial 50% of the time, or will it immediately change its state
द अदर वे अराउंड, आई मीन अगर ये लॉजिक जीरो पे होता है या कि पोलैरिटी जीरो है तो ये इमीडिएटली चेंजेस टू द वन इन द बिगिनिंग टाइम पे, और अगर इसकी पोलैरिटी फॉर एग्जांपल जीरो रहती है तो इट विल कंटिन्यू इनिशियली विद द सेम लेवल, लॉजिक लेवल। जैसे कि यहाँ पे फेज जीरो था, पोलैरिटी जीरो थी, पोलैरिटी जीरो मींस आइडियल स्टेट जीरो होगी, और पोलैरिटी फेज जीरो मतलब होता है कि इट विल कंटिन्यू विद द सेम स्टेट एज द पोलैरिटी, बट आफ्टर द 50% टाइम इज गॉन फॉर द पीरियड, then it will change its state to the other level। जबकि इस केस में ये क्या करता है कि although the polarity is zero, यानी कि आइडियल स्टेट जीरो है, बट चूंकि फेज वन सेलेक्ट किया हुआ था, इसका मतलब होता है कि इनिशियल 50% टाइम विल बी डिफरेंट देन द आइडियल स्टेट। तो इमीडिएटली as soon as the transfer cycle starts, so it will immediately change its initial state to the other logic level, and then after 50% of time it will get back to the same logic level, which is basically defined for the आई मीन पोलैरिटी। लेकिन इस केस में और इस केस में देखें दोनों में फर्क है। फॉर एग्जांपल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, क्योंकि अगर आप इस एस्पेक्ट को देखें तो यहाँ पे आप कहते हैं पोलैरिटी वन है, तो मींस कि आइडियल स्टेट इज जीरो। इफ आइडियल स्टेट इज जीरो, then what about the impact of the phase? The same, because मैंने कहा था अगर फेज जीरो होता है तो इनिशियल 50% टाइम क्लॉक होता है वो दैट इज बेसिकली दिस रिमेन्स द सेम। तो यहाँ से वो चीज फर्दर क्लियर होती है कि चूंकि पोलैरिटी वन थी तो आइडियल स्टेट वन था, और जैसे ही चूंकि फेज भी जीरो था तो इनिशियल 50% टाइम जो था वो वही रहा जो कि आइडियल स्टेट का था। उसके बाद बेसिकली इट्स चेंज इट्स स्टेट टू द अदर लॉजिक लेवल। और अगर हम यहाँ पर देखें तो चूंकि इसका पोलैरिटी इसकी वन है, आइडियल स्टेट वन है, तो चूंकि आपने फेज को वन रख दिया है तो इनिशियल 50% जो टाइम होगा वो दैट विल बी द डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसीलिए starting with this one and then it goes back, it goes to the low level initially because of phase one, and then gets back to the initial state where it was initially the, I mean before the transfer cycle start। तो खैर ये चार एस्पेक्ट्स हैं इस क्लॉकिंग मैकेनिज्म के SPI के अंदर। और अदरवाइज इट्स द क्लॉक सिग्नल नो मैटर विच क्लॉकिंग मोड इज यूज्ड, लेकिन ये चारों चारों क्लॉक सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। and there will be only one clock mode will we be using in the system, and it depends upon the clock mode of the slave। जिस slave से आपने correspondence करनी है, communication करनी होती है, उसके ही clocking mode पे आप अपने master को configure करते हैं। और ये वो चार possibilities हैं जिन पे master अपने आप को configure कर सकता है when it comes to the clocking mode। एंड ये MSI या MIS को तो ये जो डेटा सिग्नल होता है, दैट कैन बी एनी रैंडम डेटा, यहाँ तो एक सिंपल डेटा बनाया हुआ है। और दूसरा ये कि इस पूरे ड्यूरेशन में ऑफ द ट्रांसफर साइकिल आपका स्लेव सिलेक्ट होता है वो कंटिन्यूसली लो स्टेट में होता है, बिकॉज यू हैव टू कीप सिलेक्टेड द स्लेव जिससे आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। और ये सैम्पलिंग पॉइंट बताते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पे आपका डेटा सैंपल होगा, यानी एट विच पॉइंट ऑफ टाइम द डेटा विल गेट सैंपल्ड, यानी रीड कब हो रहा होता है वो जब ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस एरो से देखें तो इट इज समवेयर, इट्स ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ दिस टाइम पीरियड। तो मिडल में अगर हम इसको ऊपर एक्सटेंड करते हैं तो ये इस पॉइंट पे आता है, यानी हेयर। तो ये वो सैम्पलिंग पॉइंट्स होंगे जहाँ पे डेटा सैंपल हो रहा होगा SPI के अंदर। तो ये तमाम एरोस जो है वो लाई करते हैं इन द मिडल ऑफ द क्लॉक पीरियड। और इसको अगर हम ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर लें तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्लॉकिंग मोड ये वाली है फर्स्ट वाली, जिसमें क्लॉक पोलैरिटी जीरो है, क्लॉक फेज जीरो है, तो उस वक्त क्लॉक की इस राइजिंग एज के ऊपर, यानी इन द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, इट विल गेट सैंपल्ड बाय द रिसीवर। यहाँ सैम्पलिंग इसी होगी। जबकि इस केस में देखें तो it will be sampled on the falling edge because of this clocking mode। तो यहाँ पे सैंपल होगा, और इस केस में भी ये फॉलिंग पे सैंपल हो रहा है, और इस केस में ये राइजिंग क्लॉक एज पे सैंपल होता है। फॉलिंग मींस कि लॉजिक लेवल जब चेंज होता है फ्रॉम हाई टू लो, दिस इज फॉलिंग, एंड राइजिंग मींस व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम जीरो लेवल टू हाई लेवल, दैट इज राइजिंग। तो उसमें ये, तो दिस इज द सैम्पलिंग पॉइंट्स व्हिच इज गिवन इन दिस डायग्राम। होपफुली नाउ यू हैव द आइडिया अबाउट दिस एस्पेक्ट के हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इसके बाद once you understand this concept, now we have to see what are the pros and cons of SPI protocol। SPI के pros में क्या है कि point to point connection is fast और point to point connection। point to point connection मतलब होता है कि between two dedicated systems, यानी कि there is only one master and there is only one slave, तो that is point to point। लेकिन इसमें multiple slaves possible है तो that is another story, but you can see this is one of the advantages of using the SPI। if you have like point to point connections so then it will be very fast। अच्छा, easily allow स्ट्रीमिंग को constant data flow, यानी constant data flow इसमें allow है। आप you can set continuous data flow, स्ट्रीमिंग आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि without any stop।
आप मतलब कि you can continuously send bits huge bits of information over the SPI bus. अच्छा, इसमें कोई प्रोटोकॉल में एड्रेसिंग नहीं है, सो इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट। एड्रेसिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ऐसा कोई आप ब्रॉड एड्रेस ब्रॉडकास्ट नहीं करते बस के ऊपर, जैसे यूजुअली आप ईथरनेट में कर रहे होते हैं, या हमने जो आईपी एड्रेसिंग पढ़ी होती है, आईपी एड्रेसिंग के अंदर आप इंडिविजुअल स्टेशन को आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई एड्रेसिंग नहीं है, क्योंकि इसमें एक फिजिकल चिप सेलेक्ट सिग्नल होता है। दिस इज बेसिकली something which you use to assert any specific slave on the bus. तो इस पे इसमें ऐसा कोई एड्रेसिंग मैकेनिज्म नहीं है, और ये ब्रॉडली सपोर्टेड है। यानी इसमें अगर आप एम्बेडेड में जाएं तो आपको एसपीआई बेस्ड बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस मिल जाती हैं जो कि एसपीआई को सपोर्ट करती हैं। अब इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स में ये है कि इसमें ऑक्टोफोर्स एक चिप सेलेक्ट का सिग्नल होता है, मेक्स मल्टीपल स्लेव्स मोर कॉम्प्लेक्स। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको इसमें अगर आपके पास नंबर ऑफ स्लेव्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ स्लेव सिग्नल्स, तो देन यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू अरेंज the same at least a huge number of parallel physical lines so that you can assert the slaves. तो इसमें भी कुछ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ पॉसिबल मैकेनिज्म होते हैं। जो सबसे आसान मैकेनिज्म है वो तो ये कि इफ यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ आईओ पिन्स तो यू कैन यूज दोस पिन्स फॉर चिप सेलेक्ट सिग्नल्स। लेकिन अगर आपके पास you have less number of IO chains than the slaves available in the network, then you have to basically choose some other kind of methodology to, like maybe you have to bring something additional component in the middle जो basically आपको help करेगा। helping इस तरह से, for example एक कोई decoder जो कि 3 to 8 line decoder होता है, तो आप अपने master controller जो होता है उसको, उससे आपकी directly 3 lines connect होती हैं, and it with these 3 lines it will be able to like control 8 slaves, because 3 to 8 line decoder में आपके पास output पे 8 बार आ जाते हैं। So this is one of the possible ways you can establish this system in the SPI network. तो ये चिप सेलेक्ट से ज्यादा एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मीन्स के एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि डेटा जो आप रिसीव करते हैं उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता इसके अंदर। उसमें लिखा हुआ कांटेंट इफ क्लॉकिंग इज गार्बेज, तो क्या आ रहा है आपके पास? if it's a valid data or invalid data or whatever it is, there is no acknowledgement। और इसमें कोई इनहेरेंट आर्बिट्रेशन नहीं है। इनहेरेंट आर्बिट्रेशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप इसमें ये ऑल्दो के बस शेयर्ड है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन इसमें इस काइंड ऑफ ऐसे, लेकिन आपसे गलती हो सकती है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर। if what will happen if you assert multiple slaves at the same time, then what will happen? तो उसमें कोई आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है कि अगर if multiple stations try to transmit data at the same time, then what will happen? ये इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इसलिए उसमें लगे तो कोई इनहेरेंट आर्बिट्रेशन स्कीम इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और नो फ्लो कंट्रोल, यानी कि इसमें कोई फ्लो का कंट्रोल नहीं है ड्यूरिंग रन टाइम। आपको स्लेव की स्पीड पे आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और ऐसा फ्लो कंट्रोल मतलब ऑन द गो नहीं है, ऑन द फ्लाई नहीं है। So this is basically the cons of the SPI। उसके बाद SPI is used everywhere, जैसे बड़े common peripherals में LCDs and sensors, radios, lots of other chips हैं। तो SPI वगैरह basically ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है embedded devices में, components के अंदर, जिसमें ये कुछ commonly used devices होती हैं in embedded systems। तो इसमें ये आपको commonly peripheral ये मिल जाता है SPI interface। और इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर में तो जनरली ये अवेलेबल होता है, तो ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो हैव एसपीआई मास्टर्स, और कुछ में एसपीआई स्लेव्स भी होते हैं। तो ये तो इसके यूजेस पे है। और उसके अलावा अब इसकी समरी मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी समरी ये है कि अगेन एसपीआई 4 वायर सीरियल बस, ठीक है, एक 4 वायर सीरियल बस होता है जिसमें ये 4 वायर हमने अच्छी तरह डिस्कस कर ली थी। MOSI, MISO, CS और SS होते हैं चिपसेट, एंड दिस इज द क्लॉक सिग्नल। इसमें फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन है इसका। इसमें एक मास्टर होता है, मल्टीपल स्लेव्स होते हैं, और ये बेस्ट है फॉर पॉइंट टू डेटा ट्रांसफर, इजीली सपोर्टेड होता है और ब्रॉडली यूज्ड है। ये इसकी समरी है। एंड उसके बाद मैं इसकी अगर डायग्राम पे जाऊँ तो जनरली इस किस्म का डिजाइन आप बना सकते हैं ऑन द पेपर when you have some real application जिसमें SPI प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। तो depending upon the number of slaves you have to use for the given design, तो you can of course connect them this way। तो whatever the nature of the slave is, आप उसके दूसरे एंड पे whatever it is, that doesn't matter, लेकिन important is कि how will you connect this slave with the master, और master में कौन कौन से क्लॉक सिग्नल, कौन कौन से सिग्नल्स होंगे other than clock जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे to establish communication with the slaves। तो ये एक जनरल बड़ी कॉमन इसकी बेसिकली एक स्कीम है, डिजाइन स्कीम है
कि you can easily connect master with the slaves because तीन signals तो as it is आपस में से join हो जाते हैं because they share the same signals. लेकिन जो चिप सेलेक्ट का एस्पेक्ट है वो डिपेंड्स करता है कि हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव at the end of the master, and then if you have like a huge number of slaves, then it might be possible you have to incorporate some additional hardware components in the middle ताकि वो आपकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकते हैं. खैर एनीवे, जिसमें मैंने आपको 3 to 8 लाइन डिकोडर का एस्पेक्ट बताया था कि आप माइक्रो कंट्रोलर की सिर्फ 3 लाइन को इस्तेमाल करके 8 स्लेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज अ 3 to 8 लाइन डिकोडर. और अगेन जो आर्किटेक्चर वो एक शेयर्ड बस है, उसमें एस सी के एम ओ एस आई एम आई एस ओ और चिप सेलेक्ट ये 4 सिग्नल्स होते हैं और ये एक शेयर्ड बस आर्किटेक्चर होता है. उसके अलावा ये इसके कुछ आईसीज अगर आप जो कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट, तो वो कुछ इस तरह की हैं कि आपके पास ये जैसे छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सेंसर्स भी होते हैं. समटाइम्स इंटीग्रेटेड सेंसर होता है या कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो उसकी जो आईसी होती हैं इनमें ये SPI basically modern edge interface available होता है. And this is the cable that might be used for connecting the stations together. So yeah, this is basically all about the SPI introduction. Or SPI, I hope that now you have enough information about the SPI, what is SPI and why we use SPI and where we use SPI. So SPI is basically a very popular synchronous full duplex communication interface used in embedded systems. So here, that is the end of the lecture, and we will continue with another important communication interface in the next class. So thank you very much, and see you later. Allah Hafiz.